Now we will learn about its utility for guardians and teachers. So for the guardians, education psychology helps guardians to understand the growth and the sequence of children. So हमने पहले भी पढ़ा है that education के through a guardian can easily to understand कि एक बच्चा कैसे किस sequential way में ग्रो कर रहा है एंड डेवलप कर रहा है एंड किस अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स में वो डेवलप कर रहा है. और एक बार गार्डियंस को समझ आ गया, पेरेंट्स को समझ आ गया कि किस तरीके से चाइल्ड ग्रो कर रहा है, देन दे कैन एबल टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और देयर एजुकेशन और लर्निंग सर्कमस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड. तो सेकेंड पॉइंट यही है दैट दे कम टू नो अबाउट देयर एजुकेशन डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड attitudes. Next, teachers के according, it helps to understand concept of education. So the concept generally, basically, very concept of education is not clear to teachers. Different philosophers, psychologists, political scientists and economists ने explain यही किया है in their own unique way that education psychology undertakes scientific analysis, right? And education psychology present it as an evolutionary process of men's innate faculties, knowledge and skill. And we all know that through education, knowledge and skill of a person can enhance. So, through which the behavior of a child can change in a positive way. Next is, it's helpful in determining the aims of education. So, what are the aims of education? We have studied earlier also in the aims that the aims first should be determined on the basis of the learner's psychological, mental, linguistic development, right? And then it should be the second thing is should be defined on the basis of cognitive, co-native and affective domain. The third, it has to be developed the method for explaining these aims in the form of attainable objectives, right? So through these aims of education can be determined. Next is planning curriculum of education. So the curriculum here basically वो child centered होती है, knowledge oriented होती है, ठीक है. For any level on the basis of the previous curriculum आगे की curriculum set होनी चाहिए. That should be the teacher's main aim, right? And teachers should construct a proper curriculum for the viewpoint of the students. तो स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से एक प्रॉपर करिकुलम उनको सेट करना चाहिए. इन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग. सो मेथड की हमने बात की कि प्रॉपर मेथड होना चाहिए, राइट? कि पहले में जैसे कि लर्नर्स के साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को देख के मेथड चूज़ होना चाहिए. उसके बाद एक्टिविटी सेंटर्ड, ज़्यादातर जितने भी मेथड्स हैं एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए. Third thing, it's important to students, method of teacher has to be developed as per children's level. मतलब कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है या किस लेवल पे है उसके हिसाब से ही वो मेथड अप्रोप्रिएटली उसको चूज़ करके प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज इट कैन क्रिएट रियल फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन. सो हमने बात की रियल फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन कैसे, लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन से हम एक नॉलेज और इमोशन के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे चाइल्ड बिहेवियर कैन बी एक्ट पॉजिटिवली इन दैट इन्वायरमेंट. इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. सो हाउ इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इज बेसिकली everything from psychological, mental, linguistic, emotional development, social development of students during their sequential development. For instance, infancy from to the childhood, then to the adolescence, then adulthood. So in that particular sequential development, we can understand student, we can understand their behavior throughout education. So it can easily evaluate and measure the child's own performance. Now through education we can easily evaluate their performances. How come? That's because their intelligence can be measured through their interest, aptitude, attitude, creativity. So various other tests emerge which has been introduced by various scholars. So वो सब scholars ने अपने अपने टेस्ट लाए थे वो लोग, और वो टेस्ट लाए थे तो उनके हिसाब से उनको पता चला कि एक चाइल्ड का लेवल ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन, लाइक फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट निकालते हैं अल्फ्रेड बिनेट ने,
वैसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स अब हम आगे भी पढ़ेंगे जिन्होंने अलग अलग टेस्ट लेके आए थे फॉर द मेजरिंग ऑफ देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ mental abilities. So this is the end of this chapter, education psychology. So for you all guys to know how much you have understood, so I have put up some questions for you so that you can either take it by own or take it a screenshot, or just you can either comment what is your answer. So first I would like to discuss with you, if you want to take a screenshot, and you can pause the video so that you can practice it on your own, and you can match what is your answer correct or not. So the first question is, who started the formal use of psychological facts in the field of education first? So who started? We have studied that Vedic period teachers have not started, right? उन्होंने 19th century तक तो कुछ भी उनका कोई थॉट्स नहीं थे इतने. नेक्स्ट प्लेटो. तो प्लेटो हमारे सिक्वेंशियल डेवलपमेंट में आप सीरीज याद करो तो उसमें सबसे पहला नाम किसका था? प्लेटो का था, राइट? पेस्टलूजी ने किया? नहीं, पेस्टलूजी थोड़ा नीचे में था, और हर्बर्ट उससे भी नीचे में था. सो किसने स्टार्ट किया? ये आपका स्टार्ट किया प्लूटो ने, राइट? नेक्स्ट इज, who is considered to be the proponent of educational psychology? So who is the proponent of educational psychology? Who considered that education psychology was a proponent part? So I am giving you a chance to tell me the answer to it. So if you are ready, so it is option D. So he considered to be the proponent of education psychology because earlier also I explained that he is one of the most important person in the field of education psychology. In his book he has also explained it as an independent discipline, so he was a important. Question number 3. Question number 3 is, whose behavior are studied in education psychology? Do we study the behavior of animal and birds? No. Do we study the behavior of human being? Let's see. Do we study human being and animals? No, both is not possible, and none of the above. So it is a clear answer that it is B, right? Next we come upon, for whom is the educational psychology is the most useful? So किसके लिए हमने बात की है? For guardians के लिए हमने बात करी है, teachers के लिए. So इसमें और हमने तो मोस्टली अब गार्डियंस और टीचर्स में भी ये भी एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में भी कौन है? फॉर होम इज द एजुकेशन साइकोलॉजी इज द मोस्ट यूजफुल? सो फॉर टीचर्स, राइट? कि टीचर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन साइकोलॉजी की. इट्स यूटिलिटी एज अ पार बिकॉज दे वांटेड टू फुलफिल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम and needs of the student to get solved. So here our session has been end. So here it's end of our today's topic, education psychology. Please do comment how much do you like my lecture, and please subscribe for another chapter which will be the individual differences. Thank you, and we will get back in touch soon.